इतना भी पहले तो कभी किसी भी बच्चे का नहीं सुना मैंने अभी। Yes, other schools they already started before. In which country do you live, dear? You live in Dubai? Yes, in my friend's school it already started on Tuesday. दुबई में इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया, लाइक इट्स वेरी, इतना जल्दी होने नहीं चाहिए क्योंकि लाइक 15 के बाद ही बेटर रहता है टाइम एग्जाम्स का। Sir, it's because we're going to have bridge classes. That's why ब्रिज क्लासेस फॉर व्हाट? 10th after 9th exams we're gonna have bridge classes. That's why they're starting it early. So bridge classes, what is the purpose of the bridge class? To finish the portions like quicker and stuff, because in April also they'll do exams. Okay, so they will basically do the bridge classes of 10th because they are going to give you exams in April, periodic test, right? Yes, so like more preparation for 10th. That's why. That is not a good strategy for the schools. They don't just assume this thing that somehow the complete syllabus and this will uh, basically cover the responsibility. That is not the case here. Completing syllabus is not a big challenge. Understanding the syllabus and the concept is the big challenge. I don't understand why school 2 is so much hurry in the 10th class and the 12th class. So in UAE, everyone has bridge classes for 10th and 12th. I understand. Yeah, same here in India. It's not that bridge class. They called as extra classes in the summer vacation. They cut out the summer vacation and they basically scheduled extra classes to cover the syllabus in the winter and the basically in the summer as well. No, when I was in 12th, I had no winter or summer vacation. I just completely burned out the year. I can That's understand. bad. I know. But that will be, don't worry. So do one thing. Uh, we will cover the syllabus by tomorrow. Okay. Then after that, I will schedule your extra class with me. Okay. Then we'll whatever the numericals, whatever the questions you have, we will discuss that in the question. No worries. Okay. Just ping a message on the official number that I need extra class with Amir sir. So somehow arrange कर देंगे and we will discuss it. ठीक है? Okay, so thank you. Welcome. Don't worry. अच्छा, let's see who has joined. Sayyida Alvina. Hi Alvina, Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Dear, where were you? It's almost 20 minutes late. Sorry, sir. क्या कहाँ सो रहे थे आप? I'm just a little sick. Okay, okay. So have you took the medicines? चलो कोई बात नहीं. So shall we start now because already we have waited a lot. Like only 3 students have joined so far. Let's start without any wasting time. So in the last class, I've told you the longitudinal waves. So longitudinal waves, okay. So you have seen this thing how they're produced. Longitudinal waves are the to and fro motion of the like it's the kind of to and fro motion, okay, of the particles, okay. They go in the backward and forward direction continuously while moving. Am I clear? So this region is called compression. This is a high density region and this is called rarefaction. This is a low density region. Am I clear? So, Okay. Yes, Do sir. you, do you remember all of you? yes, sir. Okay. So yeah. Yes. So if I draw a graph of this, if I draw a graph of this, so basically it's a kind of, just a second, मैं इसको नॉर्मली ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. Suppose that this is a graph. So on this graph, basically this is the normal density. The origin is the normal density. Let me take the graph on the little bit this portion. ठीक है, ये वाला पोर्शन है आपका. तो this portion is the this is the normal density portion in which it is normally air. Okay. Normal density. This is the greater density, basically greater than normal. Okay. High density you can say.
high density region, and this is a low density region. Am I clear? Yes, sir. Okay. So what happened is that if you draw the graph, and this is this is the distance axis. On this axis, distance is taken. So it is like this wave. थोड़ा सा asymmetrical होगा, उसके लिए सॉरी. मैंने आपको बताया भी था मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ. So so high density region, which one is the high density region? Both of you, all of you tell me. Alvina, Arya and Reem. Compression is the high density region. So this upper portion is called compression in this graph. Okay. And this is a lower portion. It is a low density region. Am I clear? So this will be called as rarefaction. Am I clear to you, all of you? Please let me know. Yes, sir. Any doubt till now? Yes, sir. No, sir. Okay, so this is all about the longitudinal waves. So basically, longitudinal waves, compression is a part of higher density region in which particles are closer than they are normally. A rarefaction is a region in which particles are farther apart. Okay, and compressor, in the compressor, high pressure and density is there. Okay, so this is the graph of the longitudinal wave. Am I clear to all of you? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. yeah, so longitudinal wave is a kind of to and fro motion in which vibrate back and forth in the same direction. Okay, let's talk about the transversal wave. So first we talked about the longitudinal, second is transversal. Am I clear? Transversal wave. Okay. So transversal wave is basically is a kind of, you can say, in the direction up and down. Okay, in the up and down direction. Just a second, let me paste one picture. अलवीना बच्चा, आपके एग्जाम्स कब से हैं? अलवीना. Alvin, I think आपका mic mute है if you are saying, or maybe you're not there. Are you there? Okay, so picture तो मिल नहीं रही है. So basically, suppose that okay, let me tell you what transversal wave is. Suppose that आपका एक suppose that एक आपने string है, string rope कह लो, कुछ भी कह लो, आपने यहाँ पे ये string ये एक hook है, उसमें आपने string attach कर दी. ठीक है. अब what you will do is that दिस इज ये आपका कौन सा एंड है? ये आपका रिजिड एंड है, मतलब यहाँ पे फिक्स हो गई. यहाँ पे आप इसको लाइक मूव करो, सो इट विल गो इन अ वेवी डायरेक्शन लाइक दिस. यस और नो? ऐसे ही तो मूव करेगी ना. अगर आप एक रोप को ऐसे अपने हाथ से डिस्टर्ब करते हो तो इट विल मूव लाइक अ वेव. यस और नो? Yes, sir. Yeah. दैट इज द काइंड ऑफ दैट इज द बेसिकली ट्रांसवर्स वेव. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ही कर लिखते हैं, ट्रांसवर्सल में थोड़ा सा transverse wave. So this is transverse wave in which the direction of the wave is upside down. Basically in the
there is a high amplitude, there is a low amplitude. Suppose this is the kind of wave. Okay. So this region is called as crest. 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 This lower region is called as trough. Okay. Am I clear? Yes, sir. Any doubt? No, No, sir. sir. Sure. Sure, sir. ठीक है. So let me tell you what basically. So transverse wave can only be produced in two mediums, but like a longitudinal wave can be produced in all the three mediums: solid, gas, and liquids. Yes or no? But the transverse wave is only produced in two you can say mediums. Clear? So let me tell you a wave in which the particles vibrate up and down at right angles to the direction in which the wave is moving. Is called a transverse wave. Clear? है? Yes, sir. So yeah, second. Yes, sir. Okay. Second point about transverse wave is transverse wave can only be produced in solid and liquids. But not in gases. Okay. Clear? है? Yes, sir. Okay, so let me paste a picture. So this is the motion of the transverse wave. You can see this thing. This is a zero disturbance of line. It means that there is no disturbance in the, you can say, rope, or you can say anything. Okay. But if there is a disturbance, the upper portion is called as crest and the lower portion is called as trough. Am I clear? All of you, please let me know. Yes, sir. Any doubt? No, sir. No? Chalo, No, sir. ठीक है. So similarly, if you draw a graph similar to this, so instead of compression, the upper portion will be called as crest and the lower portion will be called as trough. Am I clear? Yes, So, sir. so this is the, this is the line of zero disturbance. So there is no disturbance.
line of zero disturbance. So this is like this. Okay, clear? So this is called positive displacement. Upper part, it means because it is going above the line of zero displacement, this is called positive displacement, and this is called negative displacement. So, and this upper portion is called crest, and this lower portion is called trough. Am I clear to all of you? Please let me know. And this is the Yes, sir. distance. This is the distance on the left hand, on the x-axis. Okay, clear? So Yes, this is sir. all about the properties of sound waves. Okay. Okay, sir. Okay. Let's talk about some different things about the sound waves. The first is wavelength, second is frequency, third is time. Okay. So these are the some properties of the basically आपके wavelengths. अब इसको टॉपिक को कैरेक्टर्स प्रॉपर्टीज की जगह इसको जस्ट अ सेकंड लेट मी राइट कि इसको हम लोग टाइप्स कर देते हैं. Classification of sound waves. Next topic would be next topic, हाँ, characteristic. Characteristics is basically nothing but properties. Yeah, characteristics of sound waves. So sound wave consists of basically sound waves can be described by five you can say characteristics. First is wavelength, second is amplitude, third is time period, and the next is frequency. Okay, so these are the things. Clear? Yes, sir. Okay. So let me write it down. First is characteristic. First आपका frequency. Frequency. Second है आपका amplitude. Amplitude होता है आपका how much the wave is displaced from the original position. Amplitude. ठीक है. Second. Third is speed. Clear? Frequency, speed. Time period is related to frequency. If you inverse the frequency, then you will get the time period. ठीक है. So हम लोग अभी discuss करते हैं इसको. ठीक है. Am I clear? Yes, sir. ठीक है. So let write down the wave. और हाँ, एक wavelength भी ले लो आप. Wavelength भी हो. ठीक है. So आपका frequency वाला part ले लेते हैं. Let's me write down the frequency. So what frequency is? So frequency is the number of complete waves in 1 second. Suppose that number of complete waves, it means that suppose this wave has completed, started from this point, again it has again at this point. So this is a one cycle. Clear? So how many cycles it is completing in 1 second? That is called frequency. Clear? ठीक है. Yes, sir. The number of cycles, the number of complete waves. Reduced
seconds. Frequency of the second is amplitude. So what basically amplitude is the maximum displacement. So just a second. In this part, so this is called, this is the highest point of this wave, yes or no? This is the highest point and this is the lowest point. This is called positive basically amplitude, and this is the amplitude but is in opposite direction, so it would be negative. Okay, but if we take the magnitude, it would be same, because it is this height and this height is same. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just a second. Let me draw it here. यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, चलो एंड में ड्रॉ कर देंगे उसको लास्ट को, ठीक है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particles the medium from their original undisturbed position. Clear? When a wave passes through the medium, it's called amplitude. Okay. Next is speed. So basically speed is nothing but at which speed is it is traveling. Okay. Velocity कह लो, speed कह लो, the traveled by a wave in 1 second is called speed of wave. ठीक है? Clear all of you? Yes, sir. Okay. Next is Yes. आपका that is wavelength. So wavelength जो होता है, wavelength is the, देखो वेवलेंथ क्या होता है, जब यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ मैं सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो सपोज करो ये आपकी वेव है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। सो ये आपकी, सो यहाँ से वो स्टार्ट ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुए, ऐसे जा रही है आपकी वेव, ठीक है, और ये यहाँ पे आके एंड हो गई है। तो वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है आपकी, यहाँ से अगर स्टार्ट हुई एक कंप्लीट वेव, जो भी आपकी लेंथ होगी,
देखो यहाँ से रिपीट, कहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ से रिपीट करना स्टार्ट कर दिए अपर पोर्शन ने, अपर पोर्शन से तो स्टार्ट किया था। तो यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद कहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हुआ अपर पोर्शन, यहाँ से। तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है। यस अलवीना, इज दिस अलवीना और आर्या? क्या हुआ? यस प्लीज, बोलो। कोई कुछ बोल रहा था अभी? No, sir. Sir, just say yes. ओके ओके ठीक है। या तो देखो ये यहाँ से भी हो सकती है, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी। अगर आप यहाँ से मिडल पॉइंट से लेते हो तो मिडल पॉइंट से यहाँ से, तो अगला पोर्शन कहाँ पे आकर रिपीट हो रहा है, सेम यहाँ पर हो रहा है। तो इसके बीच को और इसके बीच को जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अब हम ये भी पोर्शन ले सकते हैं, लोअर पोर्शन भी, यहाँ से स्टार्ट हुआ लोअर पोर्शन, यहाँ तक गया, यहाँ से कवर हुआ एंड देन अगेन यहाँ पे आके रिपीट कर लिया। तो आप कह सकते हो द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ठीक है, बोलो। Okay, sir. डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। सो द डिफरेंस, इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की? डिस्टेंस की बात हो रही है, तो एसआई यूनिट होती है वेवलेंथ की मीटर। ठीक है, और आपका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड की भी जो डिस्टेंस होती है दैट इज ऑल्सो इन मीटर्स। ठीक है, सेंटीमीटर या बेसिकली मीटर्स ही होती है। ठीक है, और Okay. आपकी, हाँ, और हाँ ठीक है। सो दिस इज, लेट मी राइट इट डाउन, कि आपकी ये दो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर लोगे तो ये आपकी वेवलेंथ होती है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि आपकी कितने नंबर्स ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हो रही है एक सेकंड में। ठीक है, क्लियर है? मैं क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है। अगर आपकी जैसे सपोज करो 100 वेव्स के ये कंप्लीट, 100 वेव्स एक सेकंड में कंप्लीट हो गए, तो एक वेव को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 1/100, यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, एक सेकंड में आपकी 100 वेव जनरेट हुई, और एक वेव का जो बेसिकली एक वेव का जो कंप्लीट टाइम पीरियड था, ठीक है, तो वो 1/100 है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द। सो अभी हम टाइम पीरियड वगैरह सब करेंगे, डोंट वरी, हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे इसके। ठीक है, हाँ, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ। सो बेसिकली आपका ये जो स्पीड वाला रिलेशन होता है, स्पीड आप कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ अ वेव, वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, लैम्डा ट्रैवल कर रही है, यस और नो? क्योंकि लैम्डा इज बेसिकली व्हाट, वेवलेंथ। बोलो, अल्वीना, ड्रीम एंड आर्य। Yes. लैम्डा में ही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो लैम्डा डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम पीरियड। क्लियर? या फिर आप, ठीक है, ये इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी और टाइम टेबल में क्या रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, दिस इज डिनोटेड बाय म्यू,
न्यू and u. This is called new and 1 by t. Okay, 1 by t. You can inverse them if you take t is equals to, so it would become 1 by mu. So you can see this thing, lambda is multiplied by 1 by t, so it can be written as lambda into mu. Okay, into mu in terms of frequency. Am I clear to you? To you, all of you, please let me know. Yes. कोई डाउट यहाँ तक आपको? No, sir. श्योर हो आप सब? So you can write this thing as velocity is equals to wavelength into frequency. Am I clear to all of you? जल्दी से बताओ, please let me know. Yes, sir. ठीक है, आपकी दो चीज कोई सी भी गिवन है, आप थर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो. आपको टाइम गिवन है, आपको टाइम पीरियड गिवन है, आपको लैम्डा गिवन है, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो. आपको लैम्डा गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, सॉरी लैम्डा गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, आप टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड को इन्वर्स कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. बोलो यस और नो. Yes, sir. कोई डाउट टिल यहाँ तक आपको? No, sir. श्योर हो आप? Yes. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, एक चीज और, बेसिकली एक रिच क्वालिटी साउंड होता है. रिच क्वालिटी साउंड मतलब होता है कि बेसिकली विच इज प्लेजेंट टू आवर, यू कैन से ears, is called rich quality sound. ठीक है. A sound which is not a good sound, it is very unpleasant. ठीक है. So दो टाइप्स के आपके साउंड होते हैं, मतलब बेसिकली आपके जो, आप अगर उसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो. ठीक है. So let me write it down here कि the sound the sound which is more pleasant is said to be of rich quality. ठीक है. तो और जो दूसरी बात होती है, नेक्स्ट इज अ साउंड विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट. इफ यू मिक्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, सो बेसिकली सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो सिंगल फ्रीक्वेंसी को कहते हैं हम लोग टोन. सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन. ठीक है. अ साउंड ऑफ a sound which is, let me write it down, produced by the mixture of
different frequencies is called a note. Not rupees note or a dirham. It is note. ठीक है? Clear है? You Yes, sir. already know this thing. You already know this thing. Noise is very unpleasant to our ears. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. ओके, मैं एक चीज और इसमें आपके 2 ग्राफ्स ऐड कर देता हूँ. सो basically these are the 2 graphs. Just a second. So these are the 2 graphs, and you can see this thing. Okay, so this is the highest point of this graph. So you can see this thing. This is called a low pitch sound, in which waves are basically number of waves are less. You can see the number, how many waves are there. You can see crust. How many crust are there in trough? One, only 2. So and they are very far apart. Its wavelength is very high. You can see that this is a very longer wavelength. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So the basically the wave in which the wavelength is long is larger is called a low pitch sound. Okay, and in which the wavelength is short. देखो यहाँ से start हुआ और यहाँ पे next wavelength देखो कितनी छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई ना wavelength. यहाँ से start हुआ यहाँ end हो रहा है, बहुत ज्यादा छोटी हो गई. यहाँ देखो यहाँ से start हुआ यहाँ तक जा रहा है. ऑलमोस्ट इसमें कितनी wavelength आ जाएंगी? 5 wavelengths आ रही है एक इस वाली एक wavelength. तो देख रहे हो कितना डिफरेंस आया. So this is called a high pitch sound in which the wavelength is low, in which the wavelength is small. Clear है? बोलो क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. अब बात करते हैं कि लाउडर और सॉफ्ट साउंड. ये सॉफ्ट साउंड का मतलब होता है कि इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज लो. यू कैन सी दिस इज अ लो एम्पलीट्यूड साउंड. द वेव एम्पलीट्यूड, द पीक पॉइंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस पीक पॉइंट. यस और नो? Yes. So this is called a soft sound. And now if you compare with this sound, this is called louder sound in which the amplitude is high. ठीक है? Am I clear to all of you? Please let me know. Yes, Reem, Arya, and Alvina. it's clear, sir. Any doubt till now? No, sir. No, Sure? sir. No, sir. चलो ठीक है. तो जरा 2-3 छोटे छोटे से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाएंगे इसके चैप्टर के. जस्ट अ सेकेंड. और हाँ, आप फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हो. तो कभी कभार अगर आप कहीं बुक में स्मॉल एफ देखो तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ने न्यू लिखवाया था और आप वहाँ पे एफ लिखा हुआ है. तो स्मॉल एफ. सो इट्स अप टू द बेसिकली एनसीईआरटी में आपका क्या कहते हैं म्यू यूज हुआ है, बट कुछ बुक्स में एफ यूज कर लेते हैं. ठीक है, स्मॉल एफ. सो बोथ आर सेम. यू कैन यूज एनी ऑफ द वर्ड्स. ठीक है. So the question is saying this thing that it is the frequency of a sound is given whose time period is 0.05 seconds. Let me share my screen. Actually, it got hanged. So frequency of a sound is time period is given. So there is a relationship between frequency and time period, that is 1 by t is given by the, so it's called frequency. You can see this thing. So I'm okay, f is equals to 1 by t. Okay. So it is equals to 1 by 0.05. So if you remove this decimal, 100 get multiplied, yes or no? Okay. So 100 by 5, so you will get 20. Okay.
So 20 hertz, Hz hertz is the SI unit of frequency. Am I clear to all of you? Yes. Any doubt till now in this question? कोई doubt है आपको? No, sir. ठीक है, ठीक है. So hertz is the frequency SI unit. So जरा ये क्वेश्चन देख लेते हैं. So question is कि wavelength of a sound is given. ठीक है, speed of sound given है आपको. Speed of sound is 343. ठीक है, and frequency is given. Sorry, wavelength is given. Wavelength is 1.7 into 10 to the power minus 2 meter. We have to calculate the frequency. What is given here? Speed is given, V is given, that is 343.4 meter per second, and lambda is given. Yes or no? 1.7 into 10 to the power minus 2 meter. Clear है? So, ठीक है. Let's apply the formula, that is, sorry, V is equals to lambda by T. We need the frequency. Instead of T, we will use mu. बोलो. ठीक है. So we need the frequency. Mu is equals to V by lambda. बोलो yes or no? So you have to divide the velocity, that is 343.4 divided by 1.7 into 10 to the power minus 2. So if you remove this decimal, so 10 will get multiplied divided by 10. So you can directly remove without multiplying any 10 on in denominator and numerator. And this 2 10 to the power minus 2 is in negative, so it will become positive if you take this in the numerator. Yes or no, bolo? yes, sir. 343 by 4 by 17 into 10 to the power 2. तो ये आपका आ जाएगा 22. ये आपका आ जाएगा if you divide this in by 17, 340, 20, 202 times. ठीक है. If you divide this 34, so it would basically give you. So your V is coming out to be, if you take if you put decimal 2 here, so it will get positive 10 to the power 4 hertz. Am I clear to all of you? Please let me know. You can leave that as well, 202 into 10 to the power 2. So I've just taken 2 decimal here, so it will become a small number, and 2 decimals will go here to add them up. Clear है? Same बात है. Am I clear? Yes, Yes, sir. yes.